नॉमिनेशन होंगे पॉलिटिकल होंगे या जो नामी? Well, that was the LG's big statement coming in. He said that India will respond to terror by dismantling its ecosystem along with its roots in Jammu and Kashmir, hinting at a befitting response against what happened yesterday, where 7 people were killed, 5 of them were injured. And today, Omar Abdullah, the Chief Minister of Jammu and Kashmir, also met the terror victims in the hospital. And he also said that some people with vested interests do not want peace in Jammu and Kashmir. This is a big statement coming in from Omar Abdullah. It's a very cryptic statement. Without naming anybody, he said that some people with vested interests do not want normalcy in Kashmir. Let's listen in. कई सारे कीमती जानें छीनी गईं और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा? पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। Well, Arawat is joining us live from the attack site. Arawat, Omar Abdullah has made a big statement. He says that some people with vested interests do not want normalcy in Kashmir. Is he hinting at those who provided the logistical support to these terrorists and helped them sneak in to our borders to carry out this cowardly attack? Absolutely, Deepak. It clearly indicates that the Omar Abdullah statement that she has told that the people who are here to create disturbance in the Kashmir Valley, it clearly indicates there are the people who are providing the logistics and the support to the terrorists to carry attacks, such attacks that we have seen yesterday in the Ganderbal. Also, if we'll go through this attack, we have already seen these kind of attacks in the various parts of the Kashmir Valley, but it's not possible. It's not the single one-man game that we can say, and it clearly indicates there is the possibility that there is the local hand also involved in it. The investigation agencies are probing all the facts about this. As we have seen, the national investigation teams has just arrived there at the spot and they are verifying all the facts there along with the Jammu and Kashmir police officials are there. And if we'll go through these visuals, this is the same road which is the Gagangir location here in the Ganderbal. This road leads to that very spot where yesterday terrorists struck on the civilians, in which we have seen that unfortunately 7 civilians lost their life in the deadly terror attack and 5 are still hospitalized. It clearly indicates that we have seen recently that the peaceful elections in the Kashmir Valley, but there are attempts by the Pakistan-based terror organizations to create disturbance in the Kashmir Valley. But we have seen that the terrorist organizations are deliberately trying to create the disturbance in the Kashmir Valley. After the abrogation of Article 370, we have seen the various developmental projects here. As LG Manoj Sinha was pointing out, we have seen the multiple events here which was not possible here in the Kashmir Valley. But at the same time, when these things are happening in the Kashmir Valley, it's very impossible for the terror organizations to digest these kind of things here in the Kashmir Valley. We believe that the intelligence-based agencies has already told that there are efforts by the Pakistan-based terror organizations, by the Jaish-e-Mohammed and the Lashkar-e-Toiba's offshoot, which is the TRF, who claimed the yesterday's responsibility of the Gagangir's attack here, in which 7 people lost their life. It is possible that before the winters, they are planning to push the militants here in the Kashmir Valley to create the disturbance in the Kashmir Valley. But we have seen the forces are alert from line of control and other towns and cities of the Kashmir. Back to you, Deepak.
Right, Arawat, stay on with me. I have Gursimran also joining me live on this broadcast. Gursimran, the NIA sleuths have arrived at the scene of the terror attack. And in fact, security has also been heightened in locations where outsiders or non-locals are residing. Tell us about the security apparatus in the valley following the terror attack. Deepak, the security has been heightened throughout Jammu and Kashmir, and especially at the locations where these non-locals and the migrants actually reside. Now coming to what Lieutenant Governor has speak, 18 hours after the Republic newsbreak, J&K LG has confirmed both our newsbreak. First is that the terrorists belong to the Lashkar offshoot, the Resistance Front. LG has said it is either TRF or their other side, that is Lashkar. That newsbreak has been confirmed. And second is that a newly infiltrated group of terrorists has carried out this attack. LG Manoj Sinha has said that yes, infiltration is taking place and we accept that, and the efforts are on to neutralize the terrorists that have entered the hinterland. They are taking the advantage of the topography and also the network that they have. So what we have been saying that the Lashkar's new group that infiltrated is behind this attack, and that has been confirmed by the Lieutenant Governor Manoj Sinha. Now the National Investigation Agency has been swung into the action. We are told that in a couple of days from now there will be a notification that will be issued by the Ministry of Home Affairs that will authorize the NIA to formally take over the case. Till the time, NIA will be carrying out a parallel investigation. Ganderbal police has already registered an FIR late last night that has been confirmed to us by the top functionary of the Jammu and Kashmir police, and now the investigation is underway, and some of the clues that have been they got during the analysis of the dump call data, that is the mobile tower data in the nearby location, that is now being scanned, Deepak, so as to get some major breakthrough. Yes. Right, Gursimran and Arawat, many thanks for joining me with those details. In fact, earlier during the day, viewers, Arawat spoke to a few laborers who were eyewitnesses to the attack, and they gave in some chilling testimonies about how they heard the firing just moments before the attack. Listen in. नॉन लोकल और एक यहाँ का लोकल डॉक्टर जो है उनको कल मिलिटेंटों ने अपना निशाना बनाया, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? ये तो सर मैं कह रहा हूँ कि ये सरासर गलत था, क्योंकि ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ पर टनल प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं ये हमारे विलेज की, यानी कि हमारे जो यहाँ हमारे गांव है या हमारा लेह लद्दाख है या हमारा जो ट्रांसपोर्ट यहाँ से चलता है उनकी सहूलियत के लिए ये है कि हमारे टनल बनाई गई बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मगर ये जो इन पर अटैक हुआ है, जो लेबर्स थे इसमें इन्वॉल्व जो लेबर हुए, ये काफ़ी इसकी मजम्मत करते हैं एज लोकल होने के नाते कि ये सरासर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जुल्म और ज़्यादतियाँ हैं। क्योंकि ये जो आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं ये तो कश्मीर के डेवलप के लिए है और कश्मीर के लोगों के फ़ायदे के लिए है, क्योंकि इससे पहले जब हमारे यहाँ टनल नहीं थी तो करीबन 10 या 20 दिन लगते थे गाड़ी को लेह लद्दाख जाने के लिए। उसके वजह सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टनल्स 2 प्रोजेक्ट बनाए वो बेहतरीन थे, हम उसकी मतलब तारीफ़ करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट बनाए। तो आज हमें इतनी सहूलियत होती है कि इन टनलों से पास होकर हम जब वहाँ गाड़ी लगभग 1 या 2 दिनों के अंदर लद्दाख तक पहुँचाते हैं और वहाँ पर हम जो अपनी बिज़नेस को बढ़ाते हैं आगे, उससे हमारी जो हमारा रोज़गार है वो भी बढ़ता है, वो भी अच्छी तरीके से चलता है। तो ये जो कल जिस तरीके से भी अटैक हुआ है, जिसने भी किया, मैं उनकी बहुत मजम्मत करता हूँ। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सरासर गलत है, ये अटैक होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जो लेबर इनमें मुलवस हुए, जो लेबर बेचारे इसमें डेथ हुए, उनका परिवार का सोचना था, उनकी जो बैक फैमिलीज थी उनका सोचना था, ऐसा नहीं करना था। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर भी कोई निशाना न बनाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे कश्मीर के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि हम कभी दोबारा ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मरकज़ एक बार जो इशू कर देता है उनके लिए उन्होंने पैसे इशू कर दिए। ये हमारे लिए फैसिलिटीज़ है, हमारे लिए गाड़ियों को जाने के लिए हमारी बेहतरीन सारा अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो मैं कंडेम करता हूँ, हमारे यहाँ लोकल जो लोग रहते हैं वो भी कंडेम करते हैं इस चीज़ को कि दोबारा ऐसा अटैक ना हो, ऐसी जाति और जुल्म जातियाँ ना हो, ऐसे अटैक्स ना किया जाए। कल हमारे साथ मौजूद हैं जो बिल्कुल उस इंसिडेंट स्पॉट के सामने बिल्कुल रहते हैं। आप मुझे बताइए, जो इंसिडेंट कल हुआ, यहाँ पे जो मजदूर बाहर से यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, इसमें एक डॉक्टर भी है, उन्हें फायरिंग करके उनमें जो 7 लोग जो हैं उनकी हत्या कर दी, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? ये सर बहुत बुरा हुआ हम लोगों के लिए, हम लोगों के नहीं लिए, पूरे हर किसी के मजदूर के लिए बहुत बुरा हुआ, कि इससे टनल के इस काम से कितने गरीब मजदूरों की रोजी रोटी चल रही है, कितने बेचारे बाहर से यहाँ पे काम करने आए, घर में बीवी बच्चों को छोड़कर आए। हम लोग खुद काम के दिन कर रहे थे, आज हम लोगों को भी बेकार बैठा पड़ा और परेशानी पूरी, ना रात ना दिन कहीं है, ये पता नहीं कब क्या हो।
घर में जो बच्चे वगैरह हैं वो घबराए हुए हैं, हालांकि आप भी अपने घरों से रात भर बैठे रहे सर, पूरी रात भर बैठे बैठे से रहे। हालांकि अगर इन मजदूरों की जो बात करें जो कि बाहर से यहाँ पे आए थे, टनल का काम जो कि एक हिस्टोरिकल यहाँ पे एक टनल बनने जा रही है, हालांकि कश्मीर की जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे उनको ही टारगेट किया गया, उसके साथ एक डॉक्टर भी है उसको भी निशाना बनाया। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? ये बहुत बुरा, बहुत गलत हुआ सर, बहुत गलत हुआ ये। इसके लिए पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आइंदा के लिए जो आगे बाकी मजदूर काम कर रहे हैं उनको किसी किस्म की मुसीबत नहीं आनी चाहिए। इस कम से कम 6 या 7 साल में या 8 साल में कितने मजदूरों का, कितने लोगों का घर चला। आज इस वक्त में पूरे ज़ीरो पे बैठ के अगर ऐसा ही रहा तो कौन से कारोबार चलेगी यहाँ पे? क्यों? इसमें टनल के मजदूरों की नहीं बल्कि टूरिस्ट से लेकर हर मजदूर के लिए ये बहुत मुसीबत का सामना बन गया। क्या फ़ायदा मिलता है इनको, इन चीज़ जैसे लोगों को जो टारगेट करते हैं, कभी आर्मी के जवान? क्या फ़ायदा मिलता है? गरीब बेचारे आवाम के गला काटा गया तो क्या, कौन से फ़ायदा? ये कौन से फ़ायदा है? ये कौन सा इंसाफ है? ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है ना। जो इनके आंका बैठे हुए हैं उन आपका क्या रहेगा उनके लिए संदेश, जो ऐसे इनको कहते हैं ऐसी कार्रवाई करने के लिए? हालांकि इसकी भी अगर हम बात करें, जो कि कश्मीर का ही रहने वाला ये मास्टरमाइंड है बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान